Hello student, this is part second video on gun chapter number 9, class 11th history, industrial revolutions. Now today we have discussed development of transport system. Now अब देखिए बेटा, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, वहाँ पे प्रिपेयर गुड्स बनने लग गए थे। अब उस गुड्स को बेटा ट्रांसपोर्ट के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया? क्या उन्होंने वाटर वे को यूज़ किया, उन्होंने लैंड रूट्स को यूज़ किया या एयरवेज को यूज़ किया? सो in the development of the transport system we have discussed rivers and coastline facilities the movement of goods in England. Transport by the waterways was cheaper and the faster than land until the introduce of the railway. देखो बेटा, जब तक रेलवे इंग्लैंड के अंदर 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले बेटा जो ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा था वो वाटरवेज हो रहा था बेटा। ड्यूरिंग द 1724 रिवर्स इन द इंग्लैंड प्रोवाइड 1160 miles of navigable waters except of the mountain regions, other areas within the 5 miles of a river. Rivers also the provide the easy movement of coastline ships. ठीक है, coasters since all rivers flow into the seas also. Now development of the financial system in England, especially the establishment of the Bank of England, also the 1694. ठीक है, so the financial system of England was implemented by the Bank of England which was founded in 1694. तो पहला जो बैंक बेटा वहाँ पे फाउंडेड हुआ इंग्लैंड में स्टार्टिंग, वो हुआ बेटा 1690. So the financial system of England was implemented by the Bank of England which was founded in 1694. By 1784 there were more than the 100 banks. By the 1820s it increased to the more than the 600 banks. London alone had the 100 provisional bank. अब देखिए बेटा, टाइम टू टाइम वहाँ पे बैंक कैसे बने, कितने सारे बैंक्स हो गए, और स्पेशली इन द लंदन सिटी, अकेले लंदन में बेटा मोर देन 100 प्रोविजनल बैंक सेटअप थे. नाउ वी मूव ऑन आयरन इंडस्ट्री. So England was having a plenty of irons and the coal resources which were required for the machinizations. It was also the rich in other minerals such as the lead, copper and tin, and which were required for industries also. But till the 18th century England was not having usable iron due to the poor method of smelting. अब देखो बेटा, आयरन के वहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत थे, लीड और आयरन दोनों, कॉपर आल्सो टिन, बट उसको स्मेल्टिंग करना, उसको अलग करना बेटा, वो वहाँ पर मेथड अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ. फॉर स्मेल्टिंग आयरन और charcoals were used and the method had many defects such as charcoals was too brittle to the transport across the long distance and its input trees produced poor quality iron. It was the short supply and it failed to the generate high temperature also. Now invention of the blast furnaces. So a family of iron masters, the Darby's family in the Shropshire, brought about a revolutions in the method of iron smelting. Their 3 generation, अब देखो यहाँ पे बेटा 3 जनरेशन थी. For their families developed the method of smelting iron ore. It was the blast furnaces. First, the blast furnaces use the coke that generate high temperature and replace the use of charcoals. The process was the further refined by more inventions. The second Darby 1711 to 68 developed the Rods iron, less brittle, for pig iron, and Henry Cott the 1714 to 1823 developed the pudding Francis and the rolling mills which use the steam power to roll purified iron into the bars. Now the broader range of the products could be the produced. So in the 1770s the John Wilkins made the first iron chair. Important है ये बेटा, इन्होंने जॉन विकिंसन ने पहली आयरन चेयर बनाई थी बेटा, एंड वाट्स बनाए थे, एंड आयरन पाइप्स इन द वेरियस साइज. इन 1779 डार्बी थर्ड, इसका जो टोटल ड्यूरेशन था बेटा 1715 to 91, बिल्ड द फर्स्ट आयरन ब्रिज इन द वर्ड्स ऑफ कॉलब्रुकडेल में. कॉलब्रुकडेल द फर्स्ट आयरन ब्रिज जो बेटा उन्होंने बनाया था, थर्ड डार्बी ने. रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ ब्लास्ट furnace. Due to the use of blast furnace, the British iron industry tripled its output between the 1800 to 1830s, and it is the produce were in the cheapest to the available in Europe.
So in 1820, a ton of pig's iron needed 8 tons of coil to make it, but by the 1815 it could be the produced by the using only the 2 tons. So by 1818 the Britain was smelting the more iron than other countries in the world also. Now cotton industry, we also some discuss the point about the cotton industry. So important raw materials for the textile industry in the England were wool and the flax. From the 17th century onward, the East India Company imported the belts, cotton cloth from India, and later East India Company established its political control in India and started importing along with the cotton cloth, raw cotton, which was woven in England also. So till the early 18th century, spinning was very slow and consumed the lot of labor due to the lack of good technology to make its even more proficient. Production gradually shifted from the homes of the spinners and the weavers to the factories also. So during 1780s, the cotton industry symbolized the British industrialization, and now raw cottons was entirely imported and the finished cloth was exported also. So inventions and inventors, देखो अब यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा आपके बुक में बेटा कि किस किस ने क्या क्या मेन इन्वेंशंस किए बेटा. सो जॉन काय, इन्होंने बेटा फ्लाइंग शटल को बनाया था, फ्लाइंग शटल लूम, और इन्होंने बनाया था फ्लाइंग शटल लूम को बेटा 1733 के अंदर. जेम्स हारग्रीव्स, इन्होंने इन्वेंशंस किया बेटा स्पैनिंग जेनी का, जो किया इन्होंने 1765 के अंदर. रिचर्ड ऑकराइट ने बेटा इन्वेंटेड किया था वाटर फ्रेम इन 1769. यहाँ पे 1732 है, ये 3 एक ही आएगा बेटा, 1732 है इनका ड्यूरेशन. सैमुअल क्रॉम्पटन, इन्होंने बेटा द म्यूल को बनाया 1779 के अंदर. और एमियट कार्टराइट, इन्होंने बनाया बेटा पावर लूम को 1787 में. सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस मेजर इन्वेंशंस एंड आल्सो द cotton industry. So thank you this video. Thank you.